Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Another. Good morning, Viren. Good morning, Usma. Jai Shri Krishna Ramesh. जो भी doubts है पूछ लेना. You guys are going to do the analysis today. 1 hour में liquidity grab है. So the market could move the movement towards short for a little bit time. So that could be somewhere around like 50 pips, 40 to 50 pips. Good morning, Zairji. बीटीसी में लॉन्ग है हम. एमटीएस से ले आप. So your mapping clears all the doubts and refreshes the concept stuff. Thank you so much, Jayaji. Three five four nine long in gold with three wings at all. TP1 आके 63 है. कितने लोग शॉर्ट किए थे इस लेवल से? कल के मॉर्निंग एनालिसिस के हिसाब से. ओके.
हमेशा एक चीज याद रखना, जितने भी लोग हैं, राइट, फोकस ऑन विक्स. ग्रेट रमेश जी. फोकस ऑन विक्स, राइट. हमेशा याद रखना, जिस तरफ का विक क्रिएशन होता है ना, हमेशा मूवमेंट उसी तरफ जाता है. उस विक क्रिएशन के साथ हमेशा सप्लाई या डिमांड को फॉलो करके चलो. You will always be profitable. Very less chances that you will be giving into, sorry, very less chances that you will be getting into a trap. Examples. If you notice, यहाँ पे ट्रैप किया था. जैसे कि मॉर्निंग में बोले थे, डायरेक्टली जाता है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नीचे आके ऊपर जाना चाहिए. विद दैट प्रोपोर्शनेट, आफ्टर दैट, हर एक मूवमेंट में नोटिस करोगे, द विक क्रिएशंस वर ऑल टुवर्ड्स द बुलिश साइड. हर एक पॉइंट ऑफ एक्शन, राइट, कीपिंग इन माइंड दिस वाज अ मीटिंग कैंडल. इसको छोड़ के हर एक एक्शन पॉइंट में, जब जब टारगेट हिट हुआ, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुई. सेलिंग प्रेशर बिल्ड होके द मार्केट टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द लेवल्स. With that proportionate, again the market is in the bullish side today. Why in the bullish side? Definitely market created a range of motion towards the short at this point from 150%. But M2 minimality हमेशा टारगेट क्या होता है, 200% होती है. 150% is a rare scenario. Out of 10 trades, 2 ट्रेड आपको 150% से रिजेक्शन दिखने को मिलेगी मिनिमलिटी M2 में. तो इन वन ऑफ द केसेस कल के दिन था वो, राइट. So always follow and be in the directions of the movement where you can proportionately look for an executions in the directions of the analysis जो आप करोगे. Opposite directions में मत रहना, कभी भी याद रखो. गुड मॉर्निंग रितेश. मेरा टारगेट मॉर्निंग में ही दोनों मेरा टारगेट मॉर्निंग में ही डन हो गया था, तो बैड बाद में ट्रेड ही. ओके. गुड मॉर्निंग उस्मान. क्या बोल रहे हो? मेरा टारगेट मॉर्निंग में ही डन हो गया था, तो बाद में ट्रेड. श्योर. जो भी है. रेंज ऑफ मोशन को हमेशा देखो, किस डायरेक्शन में जा रहा है. हाउ इज द एनालिटिकल वे शोकेसिंग, व्हाट इज 1 आवर इंडिकेटिंग. सबके साथ मूवमेंट टू मूवमेंट प्राइस एक्शन में बने रहना. ठीक है.
Sir, M2 supply draw once adi torsi. M2 supply drawing. First supply illide. So in the action plan, this is the first supply of the moment, correct? So when you take this moment action plan, you will allocate the structure from this point, right? With that structure, point of motion gets into the play of M2. Example, so this is my supply, which I will resonate it from the movement action plan of this. What do I notice? A M2 formation. When there is a M2 formation, direct target will be 200%. Because yesterday it took a rejection from 150, so we kept it at 150 motion. Okay, Nathan, clear? But other 200% tanka tagobarda. No, the moment is still 200% only. Out of 10 cases, 1 or 2 cases you will find taking rejection at 150%. Now everyone is able to see this training, no? Stream is moving it right. Sorry, stream is moving it. There's no lag in the stream. That's what I'm trying to say. If you're getting lag, just refresh it once. Okay, Nitin. Hope you got the point. M2 allows us supply draw demand 150% to. You should only understand what you're saying here. M2 allows us supply draw demand 150% to supply 200% tanka.
What does that mean? You're talking about conversion. If you're talking about the conversion post completion of this was the first supply what we had. So this was the conversion what we'll be looking for with the proportionate of the POI range. किसी भी तरफ का movement breakthrough उसी तरफ का action plan subordinate, right? So in this motion, we didn't had a execution at this point directly, right? So the first execution point of motion was over here with S2B1, second with three wing setup, third today morning with the same motion plan. Short के लिए, yes, we had at each and every level for an execution proportion, execution movement allocation. Proportionate क्यों आ रहा है algorithms? Okay. Proportionate. I think I heard it somewhere, I guess, today. Yes, I heard it somewhere. Usma, how is your analysis going on? How is your trade-off execution going on? For the beginners, one thing you guys can follow. Okay. So when the movement is in the action, right? Example, if the movement is towards the short and you don't know where to enter, right? You can leave this proportionate of the demand. Oh, match bhi ho gaya. Once you get a retracement of a supply, right? At that point of action, market from that motion range where you see a S2B1 creation, you can look for an execution in the direction. Same in the opposite. If the market is in the supply zone, which is going towards the long, right, and you see a demand, draw the previous first come first serve demand range. With that demand range, you will see a setup creation over here with S2B1. With this proportionate, look for a long. As keeping the target smaller one, the previous one will be your first target. As in this motion, if you notice, this was the supply. With this supply, you got a retracement. With this retracement, wherever you see a setup formation, with that setup formation, you can look for an execution. Only for beginners. Okay. So you guys will not be having a FOMO of missing out of 180 pips. You will have a smaller range of target, but that will be sufficient to start with. Alright? जब start करोगे, it will be easier for you to catch hold of trades in a long run. सर चल रही है बस S2B1 थोड़ा थोड़ा समझ नहीं अलग. Okay. Sir did all the testing and live analysis, but real capital में मसला हो जाता है. Then I switched to demo for 1 month, happening with 3 months.
नो वरीज। रियल कैपिटल के साथ जब ट्रेड करते हो ना, दैट फियर मोशन जो है, the fear of getting stopped out, SL hunting and all, that is the real issue that you're not able to sustain. You're you're not able to sustain in the real cap. Okay. Start small, start compounding. With compounding, try to build the momentum. Don't hurry in anything. Okay, Usma? मैं शॉर्ट में तभी बैठूंगा वरुण जब मार्केट में फिर से त्रिशूल फॉर्म होगा 1 आवर में। उससे पहले नहीं। तब तक के लिए लॉन्ग ही है। सिर्फ स्मॉल से स्टार्ट लेता हूँ, और अगर वो कैपिटल ज्यादा है तो 1 मंथ फिर लाइव एनालिसिस करता हूँ। अभी पैसा नहीं लगा, जिद पैसा नहीं लगाता। ओके उसमें। It's a very good explanation to enter late in direction. आपका लेट एंट्री क्यों हो रहा है जय जी? वो तो समझाओ मेरे को पहला। आपका होना नहीं चाहिए लेट एंट्री। आपका सेटअप्स के साथ एंट्री करना चाहिए, राइट? हाउ टू फाइंड मिनिमलिटी? Example, you have drawn one supply. In that supply motion, there is a supply movement which is going in the direction. And if you see a rejection in the supply before completing the 100% of the supply movement, that's when minimality is considered. Then, depending on where the rejection was, you mark the M1 and M2 and allocate the targets. Okay. सर कभी कभी लेट सिस्टम चालू करता हो तो लेट हो जाता है। ओके। ओके सर। फेयर, फेयर रीजन।
Why do you make complicated things look easy? किसका मुंह से आ रहा है देखो. ब्यूटीफुल यार, एक और स्पाइक दे के खत्म करो इसे. आइसबर्ग जोन में ही है. जब तक हाई वॉल्यूम नहीं आता है, नो रिवर्सल लुकिंग. Recipe book, you should replace why with how. How do you make complicated things look easy? What is minimality M1 and M2? वीडियो में है, जाके देख लो. जैद जी, फिर से गलत है. आइसबर्ग रेंज ये होती है ना 1 आवर में. Why are you getting confused, Jay? Please watch the volume video again. हाई वॉल्यूम, हाई कैलिब्रेशन, आइसबर्ग रेंज सब अलग है ना. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सर आपका यूटीसी टाइम किस पर सेट है? एंड आई हैव वन क्वेश्चन, दैट अगर कैंडल वन एंड कैंडल टू में विक फॉर्म नहीं. मेरा यूटीसी में ही है, सिर्फ यूटीसी. एंड आई हैव वन क्वेश्चन, दैट अगर कैंडल वन और कैंडल टू में विक फॉर्म नहीं हो और बाद में सेटअप फॉर्म हो, बट विक कवर नहीं कर रहा, तो शुड बी लेफ्ट दैट ऑर्डर और नॉट. आप छोड़ सकते हो, राइट? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अगेन फॉर द बिगनर्स, राइट? ये एक कैंडल है जो कि मार्केट ऊपर के लिए गई है. उसके बाद फिर से एक मोशन कैंडल है. उसके बाद कंटिन्यूटी में गई है, बट दोनों में विक नहीं है. एंड थर्ड कैंडल में सेटअप फॉर्म हो रही है, राइट? मतलब डेफिनेटली यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा है. ये मार्केट डेफिनेटली थोड़ा देर ऊपर जाएगा, बट मार्केट रिवर्स होगा. यहाँ तक इस मोशन रेंज में जब सेटअप क्रिएट होगा, तब एग्जीक्यूशन देखना. डायरेक्टली यहाँ पे या यहाँ पे मत बैठना, राइट? एग्जाम्पल में देखना चाहोगे तो इफ यू नोटिस, कैंडल वन, कैंडल टू, राइट? यहाँ पे हर एक रिटेलर लॉन्ग के लिए बैठे, बट व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? मार्केट फिर से वापस आके स्टेडी स्टेबिलिटी क्रिएट किया एंड यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके मूवमेंट जनरेट हो, राइट? So this is the allocations that you have to keep focusing on. So not with the direct motion. Same with this. If you notice, candle one,
candle 2. Everyone sat in this motion, but market came down till the liquidity motion and then continued the directional move. So let go. That's totally fine. Let go. Don't enter somewhere where you don't have an execution point at all. This is for everyone. Sir, new scandal akka pakka pakkadu. Sir, new scandal akka pakka. Okay. So, sir, new scandal akka pakka consider madveka bedwa. Sir, one math ready. You have executed the trade with the setup over here, with the setup over here. This movement you can let go because if the analysis is as per the minimality M2, definitely the target will be M2's level only, right? But looking for an execution at this proportionate will not be valid for you at the current stage. Why? Because there is no setup. If you enter in a FOMO of this over here, definitely it will hunt you out. Huh. Here you can look for an execution because we had a set, right? So you have to follow that movement before looking for any kind of execution. सर 3 AM वाली कैंडल में एग्जीक्यूशन किस प्राइस में होगी? 3 AM वाली कैंडल यार यहाँ पे होगा ना? 3 विंग सेटअप मतलब यहाँ पे होगी. गुड मॉर्निंग राजू. वन 40 pips running TP1 head. जैसे ही रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होगी तब वो 3 विंग में है, राइट? बिकॉज 1 2 3, राइट? S2 B1 में होता तो आप कहाँ पे एंट्री करोगे? एग्जाम्पल वाइज बॉडी क्लोजर, कन्वर्जनल बॉडी क्लोज, सेकेंड कैंडल का जो बॉडी का ऊपर जब जाएगा तब एग्जीक्यूशन लोगे. ओके, but in consideration of 3 wing, yes, directly you can look on the conversion from red to green. But S2B1 में सेकेंड कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोज होना है. Okay, in 3 wing setup we need 2 long wicks and what to check in volume. सब एक ही दिन में चाहिए अनुराग. Take step by step. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸೆಟಪ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ,
నేను చెప్తా నీ చూసుకో. ఓకే ఓకే మేడం. చెప్పండి. ఆ నేను చేస్ నేను చె- నేను చెప్తా నీ చూసుకో. ఓకే. That is, the first candle also has the body width. If there is only wick, आपके हिसाब से कुछ बोलते हैं ना, ऐसे क्या है वो, डोजी या कुछ, right? If you notice three wings, right? So what do we see? Body. We have a body over here. So in this proportionate, one, two, three, right? So here in this candle will be your execution, because one, two, three candle confirmations we had got. When there is a candle without a very less body, then you can consider it on the third candle itself. Doji. Okay, Usman ji. నీ లెవెల్స్ నా లెవెల్స్ తో మ్యాచ్ అవుతుంది. ఎంత ట్రేడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. నీకు పర్సనల్ మెసేజ్ చంపా, ప్లీజ్ చెక్ చేయి, రెస్పాండ్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. It will be in supply and demand tab. What is the first motion that you will be looking over here? Will you be looking for a direct entry? No. First allocation point will be of this POI range of motion, high wick range, double substandards, right?
So this will be your first allocating point. Post completion of this first allocating point, then you guys will look for the second, which is taken under the consideration of this, not prior to that. Okay. This will be the allocation on the setup creation, with the setup creation and a drawback allocation. Okay. Drawback जब होगा जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये ब्रेक होगा एंड इस रेंज ऑफ मोशन में हमें सेटअप क्रिएट होते हुए दिखेगी, उससे पहले नहीं. ठीक है. जो भी डाउट्स है पूछ लो. Stream will be there for next 15 minutes. Distribution of the formation is very much important whenever you're looking for a trade which is in proportionate to 150 pips to 200 pips. So follow that range of movement before executing the trades in FOMO. ठीक है. How many languages do you speak? Somewhere around 12 to 13, I guess. Sorry, 13 to 14. 12 to 13. Arigato mas means thank you in Japanese.
The Singh Shermans. You're the best in Korean. ¿Dónde aprendes tanos cinemas? Where did you learn so many languages in Spanish? Beautiful, guys. This is the last one, please, sir. Parklor mat matro crease closer. I can't teach you, Nacha. The meaning of that is, can you teach me some languages? Which I can't do. उतना टाइम होता तो डेफिनेटली कर देता. कौन सी लैंग्वेज इतनी ज्यादा कैसे? इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे आ सकती है किसी को? Yeah. Sir, I think you're still young, amazing. Yeah, pretty young. Sweet 18. Good morning, Rakesh.
We want to know about you and learn from you so much, sir. Definitely. Learning you will get, no doubt. Joined late, please explain next plan of action for gold. Explained no already. ये टारगेट था, टारगेट हिट हो गया. Now the first proportionate of POI will be taken under the consideration because high wick range hai. So what we'll be doing? We will double cross, right? Once the double cross allocation is done, what is the next step that needs to be taken under the consideration? On the setup formation over here and continuity in the red candle, we will look for an execution of a target till this completion of demand. Okay, clear? This will be the moment action point. जैसे कि सुबह में बोले थे 50 पिप्स to 60 पिप्स का ड्रॉप डाउन दिखने को मिलेगा टारगेट से. Here you go guys, witnessing the live movement. अभी 4 मिनट है सिस्टम क्लोज होना है, so yeah. Anurag, where are you identifying this movement? This is already in the motion range. The target is over here. This was the line of motion of that movement. Why will you consider M2 over here? Whatever will happen over here is all surplus movement what you are looking for. You should be identifying the surplus, not the M2 over here. पहले शो करते थे, पुरानी वीडियो देखी थी सर की. नहीं, कहीं पे भी शो नहीं हुआ. स्टार्टिंग में वो जो डेमो टेस्टिंग चल रहा था तब शो हुआ होगा, बट जब से पूरा लाइव आया है उधर से नहीं है. आई बिलीव इन वर्क मोर देन शोकेसिंग. ओके राकेश, होप यू गॉट द पॉइंट. आप कभी फेस शो क्यों नहीं करते? इन करेंट सप्लाई इट डिड नॉट टच. हो गया. ओके सर, हो गया. You're great and we are lucky to have you as guru like you. हाँ वही, वो डेमो सेशंस थे, टेस्ट कर रहे थे यूट्यूब कैसे काम करता है. अगर उस वीडियोस में देखोगे हमने रिवील भी नहीं किया था टीटीएस कॉन्सेप्ट्स को. ये ऊपर क्यों चला गया? ये यहाँ. मला पण येते साथ. काय येते साथ तुला?
सात वेळ 7 घंटाला 7 बारी नात उपेल. All the new members, whatever strategy you guys are following, look for back testing of 6 to 8 months of the data, then forward testing of 6 to 8 months of data. With that, make sure you do the live analysis for 1 or 2 months, understand whatever the strategy or concepts you're following, then come with a small capital, compound that capital, protect your capital, following a proper risk to reward. With proper risk to reward, make sure that you understand not to carry the FOMO and greed in you while executing the trades at the levels what you have learned. With this, always make sure only one thing, that your mindset is the key to all the success and all the growth you want to see in the life. So, one thing that you have to remember is it's not the strategy, it's not the levels, it's the mindset that you carry, because it's your money, your mind, your psychology, and you're creating the wealth for yourself. So this is Nitesh signing off. Happy weekend. मिलते हैं Monday. तब तक के लिए take care. Bye bye.